नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बिहार में हुआ एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 26 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल। लाल किला विस्फोट मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 4 और मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में 3 जम्मू कश्मीर के और 1 उत्तर प्रदेश का निवासी। छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबिकापुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हुई शामिल। भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। कहा, देश के इतिहास में जनजातीय समुदाय का अहम योगदान। आज से गोवा में सितारों का जमघट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत समेत दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का होगा प्रदर्शन। रजनीकांत का होगा विशेष सम्मान। और विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति पवार और अरुंधति चौधरी ने जीता स्वर्ण पदक। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत हासिल हुई है। अब बिहार में 18वीं विधानसभा का गठन होगा। पटना के गांधी मैदान में एक विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सम्राट चौधरी को और आइए आपको सीधे हम विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। For the G20 Leaders Summit. We also have with us Shri Janesh Ken, who looks after South Africa in the Ministry of External Affairs. He is Joint Secretary in charge of Eastern Southern African countries. With that, I hand over the floor to Secretary ER for his initial remarks. Sir. And thank you very much, Randhir, and good evening, everyone. You would have seen the press announcement by the ministry yesterday. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be visiting Johannesburg, South Africa from 21st to 23rd of November to attend the G20 Leaders Summit at the invitation of President of South Africa. This will be Prime Minister's 4th official visit to South Africa, following his bilateral visit in 2016 and later for the 2 BRICS summits in 2018 and 2023. This is the first G20 summit that will be happening on African soil, and in that context will bring the spotlight on the development issues of Africa as also of the global south. It may also be recalled that it was during India's G20 presidency in 2023 that the African Union was inducted into G20 as permanent member. Apart from G20 members, South Africa has invited several guest countries, non-members that we know, and several heads of international organizations to the Leaders Summit in Johannesburg. The summit will be important for India to ensure continuity of its priorities in the G20 after having hosted a very successful presidency in 2023. As you are aware, the G20 has emerged as a premium forum for international economic cooperation, as well as for discussing matters of global significance. The G20 provides an excellent opportunity for the leaders of these large economies and emerging economies, representing
over 85% of global GDP and around 3/4 of the world population to come together and discuss important issues impacting the world. These include important matters such as accelerating progress on the Sustainable Development Goals, reform of global institutions of governance, tackling environmental and climate challenge, debt sustainability, bridging the digital divide, energy transition, emerging technologies, underscoring the importance of international coordination and cooperation in addressing contemporary global challenges. Under their overall presidency theme of solidarity, equality, sustainability, South Africa has identified 4 key priority areas for its G20 presidency this year. These are: number 1, strengthen disaster resilience and response; number 2, debt sustainability for low-income countries; third, mobilize finance for just energy transition; and fourth, harness critical minerals for inclusive growth and sustainable development. The 3 plenary sessions of the Leaders Summit weave in these priorities areas for discussion by the leaders on 22nd and 23rd of November. We have conveyed to you the theme of these plenary sessions also in our announcement yesterday. The Johannesburg G20 Summit will mark the culmination of the first cycle of 20 G20 presidencies. The priorities identified by South Africa are aligned with those of India's G20 presidency and that of Brazil, ensuring continuity in the G20 discussions from the perspective of matters that are important to Global South. The Indian G20 presidency, as some of you would recall, had established a disaster risk reduction working group, signifying the importance India attached to this matter. The South African presidency has carried forward the important work related to disaster risk reduction and resilience as one of the key priorities of its own presidency. Similarly, through the Task Force on Food Security, the South African presidency has carried forward the dialogue on this important challenge as well. The South African presidency has, in a way, continued focus on issues of importance to Global South. The New Delhi's Leaders Declaration has provided a strong basis for many of the G20 outcome documents adopted this year in the various ministerial tracks. The Indian presidency's flagship priorities such as digital public infrastructure, women-led development, the action plan to accelerate progress on SDGs, as well as key outcomes of the working group from last year, including the disaster risk reduction working group and the empowerment of women working group initiated by India, have found strong resonance in the South African presidency. Furthermore, the Deccan high-level principles on food security and nutrition, commitment to triple renewable energy capacity, and double energy efficiency are some of the other key outcomes that have been reinforced in the course of discussion this year on different tracks in the South African presidency. Johannesburg Summit will also conclude the successful holding of the presidency of the G20 by 4 emerging markets and developing economies of G20, namely Indonesia, India, Brazil, and now, of course, South Africa. And this has enabled all of us collectively to bring some focus or sharper focus on matters impacting the Global South. We have been actively participating in all tracks of G20 throughout the year and now, of course, in Johannesburg, and we look forward to a successful and productive G20 summit in Johannesburg. Before I conclude, let me also mention that on the margins of G20 summit, PM will be participating in the IPSA, India, Brazil, South Africa leaders meeting, as well as holding bilateral meeting with several leaders who will be present in Johannesburg. And with these words, I'll be very happy to respond to any question that you may have. Thank you. Hi, sir, Siddhant from Vion. Are we looking at any bilateral meetings on the sidelines? If you can perhaps talk about that. Yeshi? This is Yeshi Seli from Business India. Is America's absence going to have any impact on the summit? And is Prime Minister Modi likely to meet President Xi Jinping? Because he's expected to be there as well. So this is Ayush Agarwal from ANI. Given the recent activities, how much is the Indian Prime Minister going to address global concerns like terrorism? And are we expecting a strong statement against terrorism to be reflected in the G20 leaders' declaration?
Mhm. We can take these questions. Well, thank you very much. The questions regarding the bilateral meetings, as you know, for summit of this level and this importance, this provides very valuable opportunity for leaders to interact and meet with other world leaders. So yes, there would be bilateral meeting, as I mentioned in my opening remarks, with world leaders who will be participating at the G20 Leaders Summit in Johannesburg. We are working out details of these bilateral meetings as we speak. But we will keep you posted once things are finalized, so we will be in touch with you regarding the details of the bilateral meetings. Regarding the issue of terrorism that Ayushi you mentioned, this is of course a very important subject for us. But G20, of course, as you know, is a forum where you discuss, of course, mainly economic issues and related matters. And as we speak, we are discussing a declaration for the summit. Our colleagues and teams are in Johannesburg, and all such issues are being discussed. So I would not like to prejudge what will come in the declaration, but all important matters that are relevant from our perspective, from Global South perspective, will be highlighted by our leadership. And as I mentioned to you earlier, uh, uh, given the fact that we have had successive G20 presidency from countries from Global South, starting with Indonesia, followed by us, then Brazil, and then now South Africa, it has given us an opportunity to really, while discussing all issues, but pay more attention to issues of importance to Global South. So we are very happy that in the course of discussion throughout the year in ministerial tracks, several of the priorities that we have highlighted during our presidency, whether it's DPI or whether it is food security or whether it's debt sustainability issues, have been captured in various documentation adopted during ministerial track. And I'm confident that as our team finalize the summit declaration document, some of them will find reference there also. Thank you. Huma? So I'm Huma Siddiqui from Strat News Global. You mentioned about the IPSA meeting. Prime Minister will be meeting. Would you have any idea what would be the agenda? Smita? Hi, Smita Sharma. Just following up on Yeshi's question, I think you missed out on that, and adding to it, that given the fact that you're hoping for a productive summit, but if the US itself is not in the room, and Mr. Marco Rubio has gone so far as to ask member nations to not sign upon the declaration. There have been a lot of controversies that have been overshadowing G20 these past few years. The Russian president is also not going to be there. The Chinese premier likely going to be there. Is it really going to remain as productive? Not the same question. If it's the same question, you can pass. Okay, please. Thank you. This is Nainima Basu, independent journalist. Wanted to understand, has there been any conversation with your American counterparts or South African counterparts? Because this is unprecedented. The US will not be attending. So how do you think the joint communique or the consensus will be arrived at? Thank you. Okay. Neeraj? सर अफ्रीकी यूनियन को भारत में जो सम्मेलन हुआ था उसमें उनको पूरी सदस्यता दी गई थी और उसके पहले सम्मेलन प्रधानमंत्री के निर्देश पे हुए थे और हमने उस मुद्दे को बहुत मजबूती से अपने सम्मेलन के दौरान उठाया था। 2 साल बीत गए हैं, कहाँ जिन मुद्दों को भारत ने उठाया था, आपको कहाँ लगता है कि अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार हो रहा है, वहाँ तक हम लोग पहुँचे, कितना आगे बढ़े हैं ग्लोबल साउथ के मसले पर? Take one. Brahm? सर ब्रह्म प्रकाश जी न्यूज़ से। इस समिट में जो एजेंडा है आपने बताया, लेकिन भारत की तरफ से भी क्या कुछ अलग से इसमें मुद्दे उठाए जाएंगे? खासतौर से टेररिज्म, आतंकवाद को लेकर भारत लगातार वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है, तो क्या इस मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर आतंकवाद को लेकर बातचीत करेंगे? द्विपक्षीय वार्ता में भी उठाएंगे और इस मंच पर भी क्या उठाएंगे? Thank you. I think there was a question on IPSA meeting that is taking place. As all of you know, India, Brazil, South Africa are 3 democracies from 3 continents, all from Global South. And we have
a very unique forum of coordinating among ourselves around three pillars of cooperation, I would say. One is the political coordination. The second is trilateral cooperation that we do, including people-to-people contact. And thirdly, what we do collectively as IPSA for countries in Global South, particularly on the aspect of food and hunger through IPSA Fund. So this meeting, although it is a meeting happening on the sidelines of summit, it will be a short meeting, but I'm confident that the three leaders will be reviewing what we have been following up under these three pillars of cooperation in recent time. I would like to also say that only in September this year, on the margins of UNGA in New York, the IPSA foreign ministers had met also and issued a statement also on some of the themes that we keep discussing among ourselves as like-minded countries. So that is what we expect in the IPSA meeting. But again, I would not prejudge what finally leaders will discuss and decide. So I would like you to wait, and we would certainly update you after the IPSA leaders meeting in Johannesburg. As regards question about US participation, I would like to comment on our own participation at the G20 Leaders Summit. All of you are aware of the debate in the media and the information available in public domain about the participation of various members of G20. So that is not for me to comment. As I mentioned to you earlier, for us, G20 is a very important forum. And as I mentioned to you in the last 3-4 years, starting with Indonesia and followed by our own presidency, which were very successful, where we agreed to have consensus declaration, would really pilot and take new initiative on a number of themes that impact Global South. We are very happy that these discussions have carried forward under the presidency of Brazil, and of course in South Africa also, as I mentioned to you, under 4 verticals that South Africa has outlined for their own presidency. Number of things have been achieved throughout the year under various tracks in these areas. So we are very happy that the issue of importance to Global South are at the center for discussion and are being highlighted. We are also, so I think for us, G20 is very important. And as I said, issue of priority to us have been taken forward through successive presidency. The issue of terrorism, I think I have already mentioned to you that every issue of importance to us will be highlighted, will be taken up, has been taken up. And as we have these bilateral meetings take place, we will certainly update you about what leaders have decided, and I will not certainly prejudge the outcome of these conversations at the leaders level. Finally, the issue of जो आपने सवाल उठाया अफ्रीकन यूनियन के बारे में और ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज़ के बारे में, जैसा मैंने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हमारी प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 के फ्रेमवर्क में लेके आए उसको, और ये पहली बार G20 अफ्रीकन सॉइल पे हो रही है साउथ अफ्रीका में. तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि AU विल बी ज्वाइनिंग इन दिस समिट इन जोहान्सबर्ग. और जैसा मैंने बताया कि जितने भी मुद्दे हमारे ग्लोबल साउथ के लिए इम्पोर्टेंट हैं उसको हाईलाइट किया गया है बहुत मजबूती से पिछले 3-4 सालों में, और हमें अपेक्षा है कि जो ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारी सहमति बनी है मिनिस्ट्रियल ट्रैक्स में भी, उसका किसी न किसी तरीके से डिक्लेरेशन जो है समिट की इसके ऊपर बातचीत चल रही है जोहान्सबर्ग में, उसको भी कैप्चर किया जाएगा. तो हमारे लिए आई थिंक जैसा मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ के एंगल से ये जोहान्सबर्ग समिट महत्वपूर्ण है. थैंक यू. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press conference. We shall keep you updated with all the bilateral meetings and other participation that our Prime Minister will have in the G20 summit. Thank you very much. तो आप ये विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे. 21 से 23 नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग की यात्रा पर रहेंगे. 21 तारीख को वो रवाना होंगे. 20वें G20 शिखर सम्मेलन में वो भाग लेंगे. प्रधानमंत्री विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें भी वहाँ पर कर सकते हैं, और G20 बैठक में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री वहाँ पर IPSA यानी कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जो बैठक है उसकी भी वहाँ पर उसमें हिस्सा लेंगे. तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री की यात्रा रहेगी G20 के लिहाज से, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की ये चौथी दक्षिण अफ्रीका यात्रा है.
ग्लोबल साउथ की आवाज़ जिस तरह से भारत उठाता रहा है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री की काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा रहने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज वेब्स फिल्म बाजार का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नेशनल असेंबली की मेंबर जे वोन किम ने वंदे मातरम गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किम का वीडियो साझा करते हुए सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने लिखा, भारत के लिए गर्व का पल जब रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नेशनल असेंबली की मेंबर जेवोन किम ने 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के पहले दिन वेब्स फिल्म बाजार के उद्घाटन पर वंदे मातरम गाया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के ग्लोबल कद और हमारे 150 साल पुराने राष्ट्रीय गीत के असर को दिखाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, भाषा और संस्कृति से हो। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दिल्ली के लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी सफलता हासिल की है। NIA ने 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी के साथ इस मामले में कुल गिरफ्तारियां 6 हो गई हैं। चारों आरोपियों को NIA ने पटियाला हाउस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज के प्रोडक्शन ऑर्डर पर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से हिरासत में लिया। NIA ने आरोपियों की पहचान पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉक्टर अदील अहमद राथर, लखनऊ के डॉक्टर शाहीन सईद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वागे के रूप में की है। NIA की जांच के अनुसार इन सभी ने इस आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। इससे पहले NIA ने 2 अन्य आरोपियों आमिर राशिद अली, जिसके नाम पर धमाके में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी, और जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसने हमलावर को तकनीकी सहायता दी, को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जांच अपने हाथ में लेने के बाद NIA इस केस को तेजी से आगे बढ़ा रही है और विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर पूरे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है। प्रवर्तन निदेशालय ने ब्रिटेन के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट में वाड्रा पर भंडारी के माध्यम से अवैध संपत्तियां हासिल करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। वाड्रा का बयान इस साल जुलाई में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उन्होंने आरोपों का खंडन किया है। इसे राजनीतिक साजिश बताया है। ईडी की जांच जारी है और आगे की सुनवाई कोर्ट में होगी।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।